Assalamu alaikum students. I'm your online teacher. Hope you would be fine at your homes. So students, today's lecture is about communication skills English. Communication skills English. And today's topic is the bin. The bin. So usually आमतौर पर हमारे घर में एक डस्टबिन होती है जिसमें हम अपना वेस्ट गार्बेज दैट व्हेन यू हैव रैपर्स और वेस्ट थिंग यू कैन बिन एंड द बिन। तो आप क्या कहते हैं, उसे बिन में डाल देते हैं। वही बिन आज हमारे पास है। लेट्स सी कि हम इस बिन में कौन कौन सा वेस्ट डाल देते हैं और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिन में जा रही हैं। आई कैन सी अ बिन। मैं एक बिन देख सकती हूँ। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दैट इफ़ यू आर बॉय सो कैन यू यूज़ मैं एक बिन देख सकता हूँ, एंड इफ़ यू आर गर्ल सो यू सेज मैं एक बिन देख सकती हूँ। सो सकता हूँ और सकती हूँ। सो आई कैन सी अ बिन। मैं एक बिन देख सकती हूँ। कैन आई सी अ फिश फिन इन द बिन। क्या मैं एक फिश फिन को बिन में देख सकती हूँ? यस, एज यू कैन सी हियर अ फिश फिन इन द बिन। सो यस, आई कैन सी अ फिश फिन इन द बिन। कैन आई सी a rolling pin in the bin? Sirs, yes, I can see a rolling pin in the bin. मैं एक रोलिंग पिन को बिन के अंदर देख सकती हूँ। Can I see a tin in the bin? क्या मैं एक टिन को बिन के अंदर देख सकती हूँ? Yes, I can see a tin in the bin. Now we have the next one is, can I see a safety pin in the bin? क्या मैं एक सेफ्टी पिन को बिन के अंदर देख सकती हूँ? Yes, the safety pin in the bin. I can see a safety pin in the bin. Can I see a twin in the bin? No. Friends, as you can see here, the twin, they are outside of the bin. They are not in the bin. So, the answer is no. I cannot see the twin in the bin. So, आज हमने बिन का यूज़ देखा कि हम बिन में क्या क्या किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं और हम उसमें क्या क्या बिन करते हैं। लाइक हमारे पास जो भी हमारा गार्बेज वेस्ट रैपर्स, जब भी हमारे पास कुछ भी होता है तो हम उसे कहाँ डालते हैं, बिन में फेंकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ चीज़ें देखी लाइक फिश फिन, रोलिंग पिन, टिन, सेफ्टी पिन एंड ट्विन कि ये बिन में है कि नहीं। सो फर्स्ट वी हैव द फिश फिन इन द बिन, देन रोलिंग पिन in the bin, tin in the bin, safety pin in the bin, twin, no, twins are not in the bin, they are the outside of bin. So with this we have done our lecture. So students, stay home, stay safe. Allah Hafiz.